And I know a lot of things have been going on. Should we just continue this session? Otherwise, I know we talked about the protest. Maybe I can do the analysis later in the evening for you guys and then keep it so that you guys can watch it. So, okay, let's just continue this. Let's talk about all the things then. What is going on so far, right? Since Jagrati ji brought this up about the leaders. So now all the latest news, I'm talking about all the latest news. We have seen all the ministers, जो भी जिनको क्या position मिला, right? Now, one thing on Twitter I was talking about was the law and justice minister के बारे जिनको मिला और उनके बारे में जो कि previously जो sports minister थे उनकी बात कर उनके बारे में we have shared I have shared something with you guys, right? But I hope, actually, I'll just show you that, okay? Now, again, I am not saying that these people are buddies with Bollywood or just because they have pictures or they're doing videos also does not mean कि वो उनके साथ बड़ी है या very close friend है. It doesn't mean that. I know they do it all because it's all about money and business and tourism and all these kind of things go together, right? So that's why अगर किसी चीज को वो आगे लाना चाहते हैं तो they will take help of these Bollywood stars because these Bollywood stars have huge following, right? अगर कोई सलमान को आगे लाके कुछ करने की कोशिश कर रहा है, सलमान के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, I'm talking about even politicians. So in the back of their mind, yes, I do understand the reason that they are doing it because these celebrities will have huge following, which helps, right? Then people will actually follow them. But I think where my problem with this particular and this person could be a really nice person and maybe he doesn't even know all the things that happen, right? So I think when किसी ने एक ये डाला था तो तब इसके बारे में I think पुष्पा जी ने भी डाला था about it on Twitter कि this person, क्योंकि मैंने actually मेरे वीडियो में दिखाया हुआ था कि he was there and invited for a very close party where सोहेल खान के सन का जो बर्थडे पार्टी था जिसको मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको दिसंबर 2018 में जहाँ रिया एंड अर्पिता खान come together in the car. I made that video and showed you guys, right? उसमें I also showed you guys, if you go watch the original video also, you will see that you will only see the close friend circle. You don't see anybody others. Like, it's not like all Bollywood people that they know are coming in. No, it's just very close circle that is to come in that party. So उस party में ये भी गए थे. I guess he was invited, yes, and probably people invite them and everything. That is totally different. But ये हुआ था December 2018 को, right? फिर अक्टूबर नवंबर के टाइम में एक वीडियो अगेन ट्विटर पे चल रहा है जहां पे यू सी दैट वो अरुणाचल गए हुए हैं बीइंग ह्यूमन वाले एंड ऑल यू सी इज दैट प्रमोटिंग cycling and all this, but basically if you get to the point, is promoting his being human ka merchandise. Okay, he's promoting his bicycle, and there you see this person sitting and for whole 30 minutes praising being human and the Khan. Okay, ठीक है, वहां पे भी you can say कि he doesn't know much about him and he's just telling, but then you have to watch that. Okay, let me show you guys that part where he's talking about it. And again, I'm telling again, I am not alleging anything or anything. For me, I really, and I know उसके ऊपर शायद क्योंकि I really love Meena ji and I watch her show all the time. I have high respect for Meena ji. And even Pushpa ji actually is a very good subscriber of her, and she also gives very good inputs there. So we all are people who follow Meena ji, right? But I just sent that videos of mine and that just to show that, because Meena ji was actually telling that no, he's a very nice person, he doesn't really know much about the bullyweed things going on, which to me it's very hard to digest because of the things I have watched, that these people are seen everywhere and they're seen in close parties. So it's like not possible, with all due respect to Meena ji, that it's not
possible that they don't know about these people that much, right? But I will still hope, because he is the law and justice minister right now, I'm just hoping that he is sincere and he does his job sincerely. So that's all I can hope for now, because हमें जो connections दिखते हैं हम तो वो दिखाते हैं, हमें पता नहीं है कि वो सच है झूठ है, ये हमें पता नहीं है. Abhay, wait, I didn't take Abhay, and I took Abhay ji. Nirvan can't be nasha. Okay, yeah, करता होगा जो भी. I don't want to talk about kids. They are too young kids. I don't want to talk about the young kids at all. Let's just focus on their parents for now. Talk about राहुल कनाल के बारे में मैंने बहुत बात किया है, हमने पहले भी बहुत बात किया है. जो बीइंग हंग्री के को जो चलाते हैं, जो पुलिस से जाके मिले थे आफ्टर SSR death. So we know this is whole big circle. That's the same people जो बीइंग हंग्री चलाते हैं, वो बीइंग हंग्री नहीं चला रहे हैं. बेसिकली वो खान का ही चला रहे हैं. वो भी खान का ही है, सब खान का ही है. बीइंग ह्यूमन, बीइंग हंग्री. व्हाई डू यू थिंक दे नेम्ड इट एज बीइंग हंग्री, राइट? तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ कॉपीराइट उसने दिया होगा ना, वो बीइंग यूज करने के लिए. So of course it is just same company, just that they don't want it to be seen that oh ये भी सलमान का है, ये भी सलमान का है. So that's why they do it in different streams and then different people handle it. It looks like अच्छा Rahul Khanal is the owner here, Khan is the owner here, but somebody else is the owner. But ये सब goes to the same top, okay? It goes to the same person on top who is the Khans. That's it. So they only handle everything. So yes, Nilesh Rane had specifically mentioned Israel. Correct. तो वो भी मैंने actually वेंकी जी मैंने दिखाया है जब when we talked about the whole Rane family last session, I did show their videos. तो उसमें उसने राहुल कनाल का मेंशन किया है, क्योंकि ये सब बेबी पेंगुइन के ग्रुप के हैं. ये सब सिद्दीकी, you know, जो I'm talking about सिद्दीकी का बेबी सिद्दीकी, और जो ये राहुल कनाल, ये सब एक ही ग्रुप के हैं. बेबी पेंगुइन सब. Even you showed it. Yeah, thanks. Yeah, right, Venki ji. And he might be involved in it. Yeah, they're all indirectly involved. Even if not directly, they're indirectly involved. Right, Venki ji. No, right, Abhay ji. अबे भाई सही कहा, वो बुढ़ा सलमान का भी करीब है. करेक्ट. वो सलमान का करीब क्या वेंकी जी, वो उसका जो नॉन प्रॉफिट है उसी को चला रहा है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वो जो बीइंग हंग्री है वो बीइंग ह्यूमन का ही पार्ट है. इट्स नॉट लाइक समथिंग लाइक डिफरेंट. दिस इज जस्ट द वे ऑफ शोइंग इट टू अस कि वो बीइंग हंग्री एक और ऑर्गेनाइजेशन है. ऐसा कुछ नहीं है, सबका लिंक एक ही पर्सन को जाता है. इट इज जस्ट दैट यू नो पेपर में ऐसे दिखाते हैं. सेम लाइक हाउ क्वान का भी, राइट? व्हेन इनिशियली क्वान का when people are pointing finger at Salman said no, I don't have anything to do with Kwan, right? So basically जो वो अगर वो ओनर भी होते हैं ना, पेपर पे they just try to show it जैसे कि they're just like partners, they're just this. ऐसा कुछ नहीं है. सब you know एक ही है. Raghavendra ji, okay, I just commented to Meena and Deepthi Rabia Khan video saying law and justice. Yes, I did send a video, my video also back to Meena ji to show that why this person was in a very close party, you know, with the Khan then, right? And don't forget, this is what I wanted to say. वो May 28 का था. फिर अक्टूबर नवंबर में उसी की अरुणाचल का वो सब चल रहा है, राइट? जहाँ पे वो पूरा खान ही है जो एम्बेसडर है वहां पे. उसके बाद दिसंबर में खान इनवाइट्स हिम टू द पार्टी इन क्लोज पार्टी. वहां पे यू सी हिम. उसके बाद जाके, दैट इज 2018 की बात कर रही हूँ. उसके बाद जाके, बिकॉज ये सब मैंने चेक किया ऑलरेडी, May 2019 में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने. ओके, I think what was he before? He was something, and then he became sports minister in 2019. That is why when I shared you that video, जो अभी भी थोड़ा सा शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, I showed you guys he's talking about IPL and all that, and we know कि 2019 इस समय कितना वो IPL का सब चल रहा. Connect the dots, guys. That's all I'm telling. So I'm saying that ये लोग सेलिब्रिटीज जो है, ये लोग ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस इसीलिए बना के रखते हैं ताकि उनको वो यूज कर सके. वही मैं बोल रही हूँ. एंड आई होप
that this person does not get used in the future. Now that he's got such a big role, I am hoping and praying that he is sincere and he does not get used. That's all I'm trying to say. He was sports minister before. What happened, we all know, and how many parties he has attended and supported Khiladi Khan and Salu. Exactly, Raghavendra ji, and that's clearly what I showed in my video, and that is why the fact that somebody saying कि नहीं नहीं ये bully weed के बारे में कुछ नहीं जानता, that I don't know, I cannot believe that. Being human का ही branch है ये being hungry. Exactly, Abhay ji. It is just a branch of it. That's all. That is why you see a lot of videos now where Rahul Kenal is sitting with Salman Khan, interviewing, talking, everything when they're talking about the being hungry. Thank you, ma'am, for raising topic. Thank you for helping everyone about the letter to the PM. Yes, so about the letter to the PM, like I said, जाके गणेश जी का वीडियो देखिए, साहिल चौधरी का वीडियो देखिए. They've given a lot of information how you guys have to send it, and then go and also take contact Venki ji जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि he can help if you're younger. I know a lot of younger audience also watch us with Sushant this thing. So if you're younger, you can contact him on Twitter, and then he can still do it on behalf of you. There is always a close tie-up with Bollywood and sports. Exactly वही मैं बोल रही हूँ ना. 2018 में पूरा इनका एसोसिएशन होता है और 2019 में स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन जाते हैं, राइट? एंड अब जो मिला है, आई डोंट नो, आई ओनली ट्रस्ट मोदी जी, सो आई एम होपिंग एवरीथिंग विल बी फाइन. If he is so connected with Bollywood, we can't expect things to be black and white by him. Exactly, we can't. He's so connected. Let me show you the connection right now. This is my video. I'm going to show you part of it because a part of it shows the Riya and Arpita going together into the party. So पूरा वीडियो तो नहीं ये करूंगी, but you can go watch it. It's on my channel itself, जो मैंने बनाया था. तब मैंने उनको क्लियरली मैंने नेम नहीं किया था, बट मैंने उनका दिखाया था अच्छे से. And again, I'm telling, I'm not alleging anybody anything here, right? But we are just what we see. We are just bringing that forward. That's all. And we are hoping that ये लोग सच में sincerely अपना काम करें. जो भी connection है उनके साथ, Bollywood के साथ, we don't care about it. But I just hope that they are sincere towards their job. That's all I'm saying. In a lighter note, it should be called being inhuman, correct? Channels are not for benefits of public. These are only political agendas, right, Jagrati ji? Namaste, Rekha ji. Why should a minister show so much clothes? Yes, exactly. This is not a sign of a good personality. This is and not only that. अभी मैं आपको उनका स्पीच दिखाती हूँ. ओके, वो जो स्पीच बोल रहे हैं, जो इतना बड़ा चढ़ा रहे हैं सलमान को, एंड उस होल वीडियो में आप देखिए सलमान खान अपने साइकिल के अलावा और कुछ बात नहीं कर रहा है. ओके, और कुछ नहीं, वो सिर्फ अपना साइकिल के बारे में बात कर रहा है, एंड देन ही नेम्स ऑल द मूवीज ही हैज डन. ओके, सो बेसिकली ये पूरा वीडियो में मुझे तो लगा कि वो सिर्फ सलमान को का जो मर्चेंडाइज है और उनका जो ये ऑर्गेनाइज है उसको बढ़ा चढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. This is child is crazy in closeness. He must maintain distance even if he is exactly. So let me share that with you guys right now, right? Give me a second because मुझे पहले खोल के रखना पड़ेगा उसको. Because मैं इसके लिए रेडी नहीं थी. मैं कुछ और एनालिसिस करने वाली थी जो मैं करूंगी, but for you guys it will be late to watch, so you guys watch it tomorrow. Because for you guys it will be night when I'm going to do my analysis. मैं टॉपिक अभी नहीं बताऊंगी. सरप्राइज टॉपिक. I mean, I've talked about it before. It's not like a big surprise topic, but कुछ चीजें हैं जो अभी भी क्वेश्चन मार्क है, जिसको थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि मे बी आई शुड जस्ट टॉक अबाउट दैट टॉपिक एंड देन क्लोज दैट टॉपिक, क्योंकि बहुत हो गया उस टॉपिक के बारे में. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डू दैट analysis in a little bit later after this video. But abhi, since we are talking about the things going on about all the ministers, let me share with you guys this video. I'll share two videos actually.
then you guys can decide for yourself that ये लोग कितना सिंसियर रहेंगे, सिंसियर नहीं रहेंगे, ये सब आप लोग डिसाइड करो. ओके, फॉर 1 सेकेंड मैं थोड़ा म्यूट करती हूँ अपना, क्योंकि मुझे थोड़ा सुनना है यहाँ पे. Sorry, I found it. ढूंढ रही थी उस वीडियो को because मुझे. Okay, let me share it now. So this is the video that you guys have all seen. If you guys are on Twitter and everywhere, you have seen this. Okay, let me take a few comments before I share that. Please send letters to Ganesh. Yes, please do. Like how Hiraj is saying, send everything to Ganesh. And I think he was on the other channel also today, Ganesh. I didn't watch the whole thing, but I don't know if he mentioned about the letters. If we did, then do follow what he's saying. Because see, when it comes to Ganesh ji, right, I know there are a lot of things that have happened in between, right? And kabhi kabhi kya hota hai na, if even if these people, whether they were close friends to SSR or not, who cares? They're fighting for SSR. Okay, remember that. अगर SSR ने कुछ भी थोड़ा भी हेल्प उनको किया होगा किसी को, एंड वो उस चीज को लेके फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, देन डोंट ट्राई टू क्वेश्चन ईच एंड एवरीबडी. करे अरे ये कौन सा क्लोज दोस्त था, ये कौन सा ये दोस्त थी. व्हाई यू हैव टू क्वेश्चन सो मच. दोस्त अलग अलग टाइप के होते हैं. दोस्त का मतलब वो नहीं बोल रहा है कि मैं चड्डी दोस्त था या उसका इतना बड़ी बड़ी था. नोबडी इज टेलिंग दैट, राइट? आई नो सम पीपल exaggerate things in between, but हम लोगों को वो सब we have to let go of those things, because we have to see कि this person is he fighting for SSR. He is. Then कुछ चीजें अगर हम देखेंगे कि कुछ exaggeration हो रहा है या कुछ ड्रामा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसको भी नजरअंदाज करो थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसे लोग जो एक्चुअली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड पे जाके कर रहे हैं, उसको तो अप्रिशिएट करो, राइट? बिकॉज वी नीड पीपल लाइक दिस. एंड this is a person who came in the starting and said that he has heard, or somebody told him about Sandeep Singh, if you remember, right? All that stuff that he had come as a witness at that time. So lot of things can happen in between, and people also get frustrated, right? जब कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है या वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, but कोई उनको उल्टा जवाब दे रहा है, so that time people get frustrated in life and they will do certain things to grab attention. Maybe to grab attention, he might have done some things in between, right? But what does it matter? It doesn't matter, because what matters is he still fighting for SSR or not? That is what matters, and that is the reason I support Ganesh ji, because of that he is still fighting. वो कितना भी बीच में कुछ कुछ करे या कोई भी, people are not same. 5 fingers एक जैसे नहीं होते हैं, राइट? आई कांट एक्सपेक्ट कि मैं जैसी हूँ वैसे ही आगे वाला भी रहेगा. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड टेक ओनली द गुड थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सन एंड ignore the other things and just take the good things that he is doing and focus on that. So help the people who are actually doing such things on on the road, going for protest, because we cannot do it. So if people are doing that, then help them and support them. Yes, 302. Yes, Shri Ganesh ji.
can send the letters directly. You can send the letters directly to PMO also. I don't get why sending it through a third party. Acha, that's what Venki ji is saying. Yeah. However you want to do it, however you want to. If you feel like it's too much for you to do it, then you can send it to him. Hi Janet, I'm good. Thank you. Okay, so let me share this one that I was going to share. And maybe I'll play a little bit part of it, right? Again, I'm telling it again and again. I'm not alleging something here about this person. I am just showing you the connections, that how close these people are connected. And that is why अगर हम लोग ये चीजें बाहर लाएंगे तो maybe these people also will become a little aware कि people know I have connection with these celebrities. So let me be sincere. अगर वो सच में एक अच्छे पर्सन है, sincere है, then this is how he is going to think that okay, people are thinking I'm close to this person, so I am not going to be partial. I am going to do my job properly and prove it to the people that I am doing the right thing, right? That is the reason I'm showing. I'm not putting anybody down. I'm not putting any ministers down. Okay, no matter what, I am still trusting on Modi ji and Shah ji that जो भी decision उन्होंने किया होगा ये सब के लिए, अच्छा ही किया होगा. But I'm just showing you the connection. And we already know, we have already seen the other BJP leaders' connection, with Bollywood already. A lot of things have been shared on Twitter, so you guys know that. So now let me show you a little bit on this one. And then I'll show you my video that I show where they're actually, he's in that very close party. At least Ganesh is taking the pain to go to Delhi from Mumbai just for this fight. Exactly. Exactly, Jagrati ji. Let's support each and everyone in this movement. Exactly. Don't let anyone from this movement go away. Don't bully each other. Exactly, Deepa ji. Don't bully each other. If you see on my channel till today, I have only appreciated every YouTuber because I want to see the good side of them, not the bad side of them. I don't think you would see anybody mention my name on their YouTube, but I do. If I see any YouTube, they're doing good, they're doing something each and every time, or if I have to give credit to someone, I always mention, because for me it is not about the YouTube business, it's about people. And if they're giving information, correct information, I tell go watch them and do that. But yeah, I don't see anybody mention my name. At least I'm not seen till now. जो मेंशन भी करते थे पहले वो आजकल नहीं करते हैं, at least. But as I am NRI, we cannot provide. Yeah, exactly. That is what I was telling Niyati ji. That's what I was telling. I think from the first time I watched, I thought like they were asking for certain details. And I don't feel safe to send certain details there because बहुत problem create करेगा हमें. So I can't do that, right? I am not comfortable putting the passport details or anything like that. Yeah, I'm not. So that's the reason I think I was trying to say. That is why I feel कि अगर without that kind of information, we should still be able to send, right? So that's why we need to find that that way. Let me share this. Now, by me sharing this video, please don't take it as like, oh, I'm trying to tell something bad about this minister. So I'm not. I'm just showing you the connection, and so that people know, or these ministers, whoever they are, they know that we know these connections. So let them be aware of it, that they need to do a good job. So this was something in, like you see here, September 2018, right? So yeah, अरुणाचल का बहुत चल रहा था जब सलमान खान को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर की तरह यूज किया था. And I think this guy was right there, and I'm not showing you the first part. ये बहुत एक और वीडियो है जहाँ पे पूरा दिखाते हैं, but उसमें this guy is talking about just his movies and this thing, and he's talking कि हम लोग अरुणाचल में आके मूवी बनाएंगे, ये वो जो भी कर रहा है. And of course यहाँ पे भी you can say the minister is trying to do this because it's a part of tourism kind of, right? Because this will bring Arunachal in the front, which is good because that's what these people try to do. So there's nothing wrong in that. There's nothing wrong. I'm not telling that there's anything wrong, but I'll show you something after this. यंग नेता है जहां
साइकिलिंग का एक्सपीडिशन का अंत होगा मेचुका, वहाँ से आए हैं पासांग दोरजे सोना जी। हमारे दालमिया ग्रुप, दालमिया सीमेंट है, दालमिया ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हैं महेंद्र सिंह जी, एसएसबी के आईजीपी, और यहाँ जितने भी लोग आप आए हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये जो मुंबई में हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर में है, हम लोग सब यहाँ बैठे हैं और एक्टिविटीज होगा हिंदुस्तान का पूर्वी छोर पे, अरुणाचल प्रदेश जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हिंदुस्तान का, वहाँ होगा। तो एक बड़ी सफर हमने तय किया है और आगे इसको बरकरार रखना है। मैं सलमान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि जो दो बातें उन्होंने की हैं, एक साइकिलिंग, जो साइकिल से उनका नाता आपने उन्हीं के जुबान से सुना, और अरुणाचल प्रदेश से उसके दिल से। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, ऐसे जुड़ा है। और साथ में जो आने वाला माउंटेन टेरेन बाइकिंग का जो एक्सपीडिशन को आज सलमान जी के हाथों आज जहां लॉन्च किया गया है, इसका आने वाला जो इवेंट है उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि साइकिलिंग जो है ये हमारा एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। दुनिया में किसी भी शहर का उसका मापदंड आप करेंगे कि इस शहर का स्तर क्या है, तो इस चीज को आजकल देखता है कि उसमें उस शहर में साइकिलिंग का व्यवस्था क्या है, उस शहर में साइकिलिंग करने वालों लोगों के लिए व्यवस्था क्या किया है। साइकिल का अलग से लेन बनाना, साइकिल के लिए सेफ्टी, क्योंकि साइकिल जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हम लोग क्लीन इन्वायरमेंट, हेल्दी फ्यूचर, ये सब बारे में बात करता है। तो पेडलिंग टू द फ्यूचर, अभी मैंने दिल्ली में बहुत बड़ा एक साइक्लोथॉन का मैंने लॉन्च किया, नीति आयोग द्वारा कार्यक्रम किया। उसमें हमने डिटेल में बताया कि हिंदुस्तान का फ्यूचर हम साइकिलिंग के साथ कैसे जुड़ना चाहता है। और बहुत खुशी की बात है कि सलमान खान जो साइकिल से जुड़ा हुआ बॉलीवुड के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में, ना सिर्फ ये भारत का, पूरे विश्व में साइकिल का साथ सबसे बड़ा स्टार कोई जुड़ा हुआ है तो सलमान खान जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सबने सोचा कि सलमान खान जी के हाथों से ये लॉन्च करेंगे तो ये सबसे उपयोगी होगा। तो इसलिए जब मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा तो सलमान भाई से वो खबर आया कि नहीं, आपके लिए तो, आपका अरुणाचल के लिए और साइकिल के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, समय निकलूंगा। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने आज समय निकाल करके इसको लॉन्च किया। देखिए, अरुणाचल अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है अभी तक। अभी कुछ लोग सुनने लगा अरुणाचल कैसा है, अरुणाचल किस प्रकार का, तो मुझे बताया गया कि हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स हैं, उन्होंने फिल्म के लिए काफी प्रमोशनल कदम उठाया। तो मैं आपके यहाँ बताना चाहता हूँ कि चाहे वो हमारा बॉलीवुड, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का, अरुणाचल प्रदेश में अगर प्रोजेक्ट लगाएंगे, शूटिंग करेंगे, तो उसके लिए जो सपोर्टिंग पॉलिसी और उसके लिए सब्सिडी जो भी देना है, वो आज तक किसी प्रदेश में जितना दिया है उससे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का सरकार वो समर्थन देने वाला है। पूरा फिल्म शूटिंग से लेकर के, मैं आ रहा हूँ, सबसे पहले तो सलमान जी आने वाले हैं अपना फिल्म लेकर के। ये वो खूबसूरती को भी दर्शाना है दुनिया का सामने में, और एक्सप्लोर करना, इतना खूबसूरत स्टेट जो है दुनिया का सामने में उभर के आना चाहिए। मैं खुद भी काफी इंतुजियास्टिक इस चीज को देखता हूं और इंतुजियास्ट रहा हूं साइकिलिंग और कोई भी खेल में। हमारा जो सरकार ने एक भारत देश को, क्योंकि ये युवा देश है, इसको फिट इंडिया बनाने के लिए एक कैंपेन भी चलाया, हम फिट तो भारत फिट। तो जो एक फिटनेस कैंपेन चलाया उसमें सलमान जी ने भी हम लोगों के साथ जुड़ा, उसके माध्यम से भी साइकिलिंग उसमें बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। उसके अलावा हर किसी के जिंदगी में फिटनेस आने के लिए जो चीज करना है हम लोगों को करना है। इसलिए मैं मुंबई शहर में जो लोग साइकिलिंग का इंतुजियास्टिक जिसका अप्रोच है, सबको भी मैं इनवाइट करना चाहता हूं। आज मैं दालमिया सीमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दालमिया सीमेंट के जो ऑनर है
बुनियादी फोर्स है, एएसएसबी ने बढ़ चढ़ करके इसको ओन किया है। मैंने कल्पना किया, लेकिन लीडरशिप रोल लेकर के उन्होंने पेडलिंग किया। और जब मैं गुंजी गया, हमारे जितना पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चाहे सीआरपीएफ हो, एसएसबी है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एनएसजी के लोग हैं, हमारे बीएसएफ है, जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सबको हमने कहा है, और सब इस साइकिलिंग एक्सपेडिशन से टफेस्ट ये है माउंटेन टेरेन बाइकिंग का कंपटीशन, ये है अरुणाचल प्रदेश में होने जा रहा है। तो हमारा देश के लिए भी एक शान की बात है कि इतना बड़ा साइकिलिंग इवेंट अरुणाचल प्रदेश में होने जा रहा है। मैं अरुणाचल सरकार के रिप्रेजेंटेटिव पासांग सोना जी यहाँ बैठे हैं। ये सोना साहब ने भी बहुत एक वो इंथुजियास्टिक रहा है। मैं जस्ट थोड़ा मूव कर रही हूँ कि मैं जमाने से पूरा नहीं चाहती तो प्ले अरुणाचल सरकार, उनके मुख्यमंत्री, उनके टीम, सीएम साहब के सेक्रेटरी ऑफिशियल सब यहाँ आए हुए हैं। मैं अरुणाचल सरकार को भी मेरे ओर से मैं धन्यवाद देता हूं कि बढ़ चढ़ करके इसको आपने ऑन किया है और पूरा आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में मीडिया इसको जो पब्लिसिटी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक एडवेंचरस स्पोर्टिंग इवेंट को आपने कवरेज दिया और प्रमोट भी किया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ साथ और भी अन्य लोग इसमें काफी लोग जो सपोर्टिंग रोल्स प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल इवेंट है तो बहुत लोगों का समर्थन जरूरत पड़ता है। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और इस एक्सपेडिशन, जैसे सलमान जी ने कहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो ड्यूरेशन के समय में कहीं एक पोर्शन में हम कोशिश करेंगे कि सलमान जी का जो शूटिंग डेट्स वगैरह को तालमेल करके उन्होंने जो कमिटमेंट किया है, तो कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं अंत, बिगिनिंग या बीच में कहीं इस एक्सपेडिशन को बीच में हम लोग साथ देंगे। हम लोग उसको डेट मिला करके कोशिश करेंगे। और मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं, आप जो भी मुंबई से इस आमंत्रित कर रहा हूं। और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि सलमान जी ने ऑलरेडी आपको ब्रीफिंग कर दिया, इसका सारा इंपॉर्टेंस जो हमारा ऑर्गेनाइजर ने बता दिया है। तो मैं खुद, क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूं, भारत सरकार में मंत्री होने के नाते और देश का सुरक्षा को भी देख रहा हूं, तो मैं अपने भारत सरकार की ओर से जो भी समर्थन इस एक्सपेडिशन और अन्य चीजें, जितने भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स और फिटनेस के लिए जो भी समर्थन चाहिए, हमारा भारत सरकार की ओर से हम पूरा समर्थन हम प्रदान करेंगे। तो मैं इतना कह करके मैं माइक को वापस आपको सौंपता हूं। आज का आयोजन जो जितना ये जो यहाँ मैनेजमेंट करने में जो हमारे लिए यहाँ किया है, और उनके जो फ्रंटमैन है एडवोकेट विनीत डांडा, फिलांथ्रोपिक नेचर है, वो हर समय जरूरतमंद और तकलीफ में जो फंसते किया। और एक चीज मैं कहना भूल गया, अच्छा ये वाला सुनना पड़ेगा सलमान भाई के बारे में। इनका फिलांथ्रोपिक जो नेचर है, जो जरूरतमंद और तकलीफ में जो फंसते हैं, तो उसमें एज ए ह्यूमन बीइंग, जो उनका कंसेप्ट भी है कि बीइंग ह्यूमन, जो उनका बड़प्पन, उनका एक फिलांथ्रोपिक नेचर है, वो हर समय देखता। मैं कहता हूं दुनिया में, मेरे जिंदगी में जो फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी में लोगों को सेवा के लिए हर समय तैयार रहने वाला सलमान खान जैसे मैंने आज तक देखा नहीं। इतना दिल बड़ा है और इतना वो अपने लिए नहीं सोचता है, वो जीता है लोगों के लिए। जो ह्यूमन फैक्टर उनके मन में, जो सचमुच में ह्यूमन बीइंग जिसको कहता है, वो मैंने देखा है। इसलिए मैं इस बात को लेकर के मैं आपको सराहना करना चाहता हूं, दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सो लास्ट पार्ट सुनाना चाहती थी मैं, बट अगेन आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, क्योंकि सी इवन लाइक टिल लास्ट ईयर हम लोगों ने भी ऐसा ही सोचा था, राइट? हमारे मन में भी ऐसा ही था कि सलमान खान इतना बड़ा है, इतना डोनेशन करता है, इतना सब कुछ करता है, बीइंग ह्यूमन से कुछ बहुत कुछ करता है। हमारा सडन चेंज हुआ एज सून एज SSR का ये सब हुआ, राइट? दैट इज व्हेन हमारा सडन चेंज हुआ। अदरवाइज मैं भी यही चीजें मानती थी खान के बारे में, राइट? पहले। सो आई विल गिव बेनिफिट ऑफ डाउट to all these people who are still like close to these people and trying to show them. I didn't show the whole video, but if you see the whole video, you will see how they are promoting just his cycle. He is only promoting his cycle there, actually. That is what he is there for. Kyunki being human cycles banate hain, right?
So Arinya ji, namaste. Cedar Spring ji बोल रहे हैं कि हेमा जी, NRIs don't need to share passport details information in that net. Yeah, and I wanted to flash this again and again क्योंकि दीपा जी वही मैं बोल रही हूँ that this is only for awareness, nothing against anyone or personal. Exactly, that's the disclaimer I have. क्योंकि I'm just trying to show you guys so that ये लोग भी थोड़ा aware हो जाए कि हम लोगों को ये सब पता है कि how close they are. So let them do their job properly. That's all. बार बार वही बोल रही हूँ मैं. अच्छा, so that's good, Sedar ji, that we don't have to. ये कौन है? पेडलर, कौन है पेडलर? अच्छा, आप वीडियो के बारे में बोल रहे होंगे. Don't expect any politicians to. I know. Hi, Hummingbird. How are you? Arinya ji, hello. Modi ji's PR doesn't do any background check on these men prior to the postings. Who knows? See, किसी न किसी का तो कनेक्शन होता ही है. जैसे हमने देखा है मिस्टर फडणवीस का भी इतना कनेक्शन है, राइट? बट अगर आई डोंट नो, मे बी वो देख रहे हैं कि वो कितना अच्छा काम अपने एरिया में कर रहे हैं rather than they are not looking at their connections. So that is possible, Arinya ji. Being inhuman, exactly. मुझे पता नहीं क्यों, but when I see somebody praising him so much like that, it just irritates me. Because that is not what he is. So that's why it irritates me when I see that. Philanthropic Bill Gates, right? Yeah. Hi, Swapna ji. Namaste. After all, they all need money during elections. Exactly. That is why, see, it is all about money and using other, even celebrities in order for the influence. तो अगर अभी सलमान किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी. इट इज ऑल अबाउट द फॉलोइंग. जैसे अगर मेरा चैनल है, मेरा सिर्फ यू नो व्हाटएवर 7.9K सब्सक्राइबर्स है, तो मेरे चैनल पे लोग इतना पसंद नहीं करेंगे आने के लिए, राइट? अगर कोई और चैनल जो 500K है, they will like to go there ना, why will they come here? So basically same thing. अगर कोई 25K है और वहां जाना चाहते हैं बट यहाँ पे नहीं आएंगे, so it is same basic concept that everybody follow. They want to see how many people are following you. And agar Salman Khan had huge following, then that is why even politicians, even everybody go to him, because then agar वो कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी influence करना चाहते हैं, they can use the celebrities to do that. And then in turn, these celebrities will use these people to get their work done. So because they are using them for the power. So it's like exchange, exchange of this kind of thing. It's all about money, power, influence. So that is what happens. So it's something that goes on all the time. That is for sure. But people need to be aware of it. That's what I'm trying to show you. People need to be aware कि ऐसे connections होते हैं. तो अगर हम लोग aware रहेंगे, हम लोग उनको दिखाने की कोशिश करेंगे, हमें सब पता है आप लोग क्या हो या किस किस के साथ कनेक्शन है, then maybe that will make them do their job properly. See his face. He's seeing down when he was saying he's a good human. Even he is guilty. Right? But ये 2018 की बात है ना, अभी तो पता नहीं, शायद उनका भी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ हो ये सब के बारे में, हो सकता है, we cannot say that. बट मेरा यही है पॉइंट है कि वो वीडियो था सितंबर, अभी एक और दिखाऊंगी आपको दिसंबर, क्योंकि ये आई थिंक मे बी व्हेन दे वेंट टुगेदर दे डिड ऑल दिस टुगेदर, एंड एक्चुअली देयर इज मच मोर. आई कुडंट फाइंड दैट पर्टिकुलर वन बिकॉज सडनली मैंने वो वीडियो दिखाया आपको, बट एक और वीडियो है, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो द होल थिंग, राइट? देन आई हैव टू लिसन टू इट कि कहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं. बहुत प्रेज कर रहे हैं खान को, राइट? लाइक टू मच ऑफ ए प्रेज, एंड इज टेलिंग दैट he is going forward, he is going to be the face for Arunachal, Salman is going to be the face, and ये सब कुछ बोल रहे हैं. But you can go watch it. There are many videos on it, on the same event that I showed. There are many videos on it that you can go and watch. जो actually hold on a second, ये वाला ना अच्छा वीडियो था. Let me show this because it was, I don't know if I'll get any, I think I might get copyright or something. No, I don't want to, क्योंकि अच्छा वहां पे गाना चल रहा है, मैं थोड़ा गाना म्यूट कर देती हूँ maybe, and then I will try to show you guys. It is the same event actually, but
was, it's just fun to watch it. Let me, hold on, let me share it. So basically he probably got close to Salman during all that events, right? So that's why maybe he was invited to a personal party in December of 2018. ओके, आई थिंक यू आर एबल टू सी. मैंने म्यूट किया क्योंकि यहाँ पे गाना चल रहा है, वो जो जिंदगी एक सफर वो चल रहा है शायद है सुहाना, वो शायद यहाँ पे किसी ने डाला है इस यूट्यूब चैनल पे. सो यू कैन सी ये वही इवेंट है एक्चुअली जहाँ पे वो लोग अरुणाचल में साइकिलिंग कर रहे हैं. एंड ये सारे जो साइकिल है सारे ह्यूमन बीइंग ह्यूमन के साइकिल है शायद, बिकॉज इफ यू सी हिज वीडियो ही टॉक्स अ लॉट अबाउट हिज साइकिल्स एंड शायद फ्रीली दिया होगा बिकॉज दैट इज हाउ दे प्रमोट देयर बिजनेस, राइट? फ्रीली सबको साइकिल दिया होगा वहां पे टू प्रमोट द बीइंग ह्यूमन. सो समटाइम्स ऑल्सो पॉलिटिशियंस को ये होता है कि ठीक है ये लोग अगर फ्री में सब चीजें दे रहे हैं, प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दे विल से ओके यू नो कम डू इट विद अस, इट्स फाइन, राइट? इट्स स्टिल अ गुड थिंग. क्योंकि अगर वो खाना दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, दैट इज स्टिल अ गुड डीड, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक यू नो दे टेक देम फॉरवर्ड लाइक दैट. So that is everywhere him cycling here. Okay, let me stop sharing that one. And I'm going to open the one I am talking about that I have made a video on. Let's go to, okay. I'm going to my channel video actually. Trying to look for mine. मैं इसको क्या कर रही थी, कहाँ से कहाँ चली गई अभी. That's my video. This is the video I think I sent on Twitter asking why he was again you know अगर कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी उनको इनवाइट करता है तो या पॉसिबल जा रहे हैं, ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट, कि उनका पार्टी में जा रहे हैं करके. बट that's why I'm telling, I'm just showing for awareness, but I'm still hoping that he is sincere and he is going to do a good job. He himself knows he is not good. That's why he was laughing sarcastically when he was being praised by that minister. उसको तो प्रेज अच्छा लगता है ना, जो जो बाई 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 करके प्रेज करते हैं उनका वो सब कुछ करेगा, और जिनका जो वो चीज नहीं करेंगे तो फिर उनका तो बर्बाद. And that is a very bad thing. That's a very bad personality. Fighting for justice for SSR, right? We heard Salman gave very few cycles in front of the press, and then he did not stick to his commitment. Of course, I mean, अगर ऐसी बात है तो then you know, of course, they are only doing it for. Even if he gave, how does it matter, Arinya ji? Because that's why they have this kind of non-profit organization, right? वो खुद अपने मुंह से एक बार बोला है कि उसने ये सब क्यों कर रहा है. ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपना इमेज क्लियर करना था एट दैट टाइम जब इतना एलिगेशंस थे उसके ऊपर एंड एवरीथिंग. उसने खुद बोला है ये चीज. सो दिस इज ऑल डन फॉर दैट. सो उस आड़ में अगर वो करोड़ों कमा रहे हैं, उस करोड़ों में अगर कुछ लाख दे देंगे किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, बिकॉज दैट इज हाउ द बिजनेस वर्क्स, हाउ द नॉन प्रॉफिट बिजनेस फॉर देम इट वर्क्स. Yes, trying not hate speech. Yes, it's not. So don't come target me telling that, "Arey yaar, no, this guy's person is good. You know, he's sincere." I believe you. I want him to be sincere, and that's why I'm showing you guys this. That's all. This is my video. I'm going to skip and show you guys because we are only talking about a certain minister here, right? So I want to show you guys that minister thing. So I'm going to skip a little bit because ये video मैं की थी just to show Riya coming with the sister and Arpita, who is Sohail and Salman's sister. Today we are going to make a very important connection between Riya Chakravarti and Arpita, who is Sohail and Salman's sister. Okay, so just keep watching. This is a video that is from 2018 December. It was Sohail's son. And also everything I'm telling dates here, I've verified everything in YouTube and everywhere. When I show you guys something, I have made my analysis, verified that dates may not be exact in the sense that अगर ये
दिसंबर 15 को दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये पार्टी दिसंबर में 15 से पहले हुआ था, बट आई कैन नॉट पिन पॉइंट कि किस दिन हुआ था, वो मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती, बट आई कैन श्योरली से, क्योंकि अगर आपको कभी भी यूट्यूब पे अगर आप ये सेम वीडियो अगर आप 2019 में देखते हैं, राइट, इसका मतलब वो रिपीट हुआ होगा, करेक्ट, वो 2018 में इवेंट हुआ होगा, बट 2019 में भी पीपल कैन बी शेयरिंग इट. So whenever you see a video, go back and try to research and see if you find that video in the back somewhere. If you find this video in 2017, or if you find this video in October, right, or September, then you have to go with the September October video, because that would be the when the event would have happened, right? So ये दिसंबर का मैं दिखा रही हूँ, तो इसका मतलब ये इवेंट हाँ हो सकता है कि मंथ पहले भी हुआ हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी दैट मच बैक. सो आई जस्ट वांट टू पॉइंट दैट आउट दैट मैं ऐसे ही एरा गहरे दिखाती नहीं हूँ. आई मेक माई फुल and kind of research on it and then show you guys whatever I show you here. So if anybody think that it might not be, then they can always let me know, and then I will correct it if I'm wrong. Birthday party, okay. So इस party में सिर्फ क्लोज फ्रेंड सर्कल आए हुए थे, बिकॉज जो भी ये 15 मिनट्स का वीडियो है, बट एक और वीडियो है जो कि 23 मिनट्स का वीडियो है, तो उसमें भी आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे. तो आपको दिखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ क्लोज फैमिली सर्कल था, जो कि सलमान और कुछ अनिल, जो संजय कपूर का फैमिली, सलमान खान, अरबाज का फैमिली, एंड देन उनके जो खास दोस्त हैं ना, जैसे व्हाट्स हर नेम, सोनाक्षी एंड जैकलिन फर्नांडिस. सो यही लोग दिखे. यू वोंट सी मेनी पीपल, ओनली क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, ओके, फैमिली एंड फ्रेंड्स. सो पर इसमें कौन आता है देखो यहाँ पे, और ये है सजदे. सो आई गेस दैट इज हाउ रिया गेट्स कनेक्टेड हियर, क्योंकि हमें तो पता है कि रिया को कौन पे कर रहा था, राइट. और ये 2018 का वीडियो है, डोंट फॉरगेट, दिसंबर 2018 का वीडियो है. अब जब भी आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखते हैं ना, अगर ये वीडियो आपको 2017 में भी मिलेगा, इसका मतलब कि 2017 वाला ओरिजिनल होगा, राइट. क्योंकि वो ओल्ड डेट तो नहीं हो सकता ना, लाइक कोई भी वीडियो कोई अपलोड कर रहा है तो पुराना डेट डाल के तो अपलोड नहीं करेगा. सो दैट वे आई ऑथेंटिकेट इट इन दैट वे दैट दिस इज अ ऑथेंटिक वीडियो, जो कि दिसंबर Bunty Sajde is actually his brother-in-law. He's Seema Khan's brother, so is Sohail Khan's brother-in-law, right? So they are all, and he also, I think, helps with all the Being Human company for Salman, all that franchise. What to this car? All that franchise. Yeah, so यहाँ पे I just want to read this because this is what I put in there. Because ये जो Bunty Sajde CEO of Cornerstone, we already know that, right? ये बहुत सारे सेशन में मैंने already share किया है सब चीजें. I'm just repeating here, but ये Karan Johar actually partnered with him in December of 2020. This is like after SSR thing, right? Partnered with him, and now it is called Dharma Cornerstone Agency actually, and जिसमें हमारे जो favorite Rajiv Masand है, he has joined as a COO of the company. Okay, so that's the point I mentioned here in that video also. But franchise. What to this car? यहाँ पे आगे पता नहीं कौन बैठी है, बट पीछे है अर्पिता एंड रिया. अर्पिता मैम एक फोटो साथ में कर यहाँ पे. रिया थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ प्लीज. बस यहाँ पे. और ये है वो जो क्या है, कौन है, कमाल खान जो कि सलमान का बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, जो एक्चुअली आई थिंक वो भी था जब कार में था, जब वो हिट एंड रन केस, व्हेन सलमान वाज हैड हिट some people, right, on who were sleeping on the footpath, जो भी केस हुआ था.
So in that case, I think this was one of his friend who was with him in the car. So this is one guy who knows the truth about Salman, that Salman was driving the car that day, but I guess he saved him. So that's why he's become his lifelong friend right now. So so now I'll also show you guys when Arpita is leaving. This is when Arpita is leaving the party, right? You see Arpita is sitting in the front seat here, and then there is some other guy here, and then you don't see anybody on this side. So Ria didn't live with her. So I guess Ria was still in the party then. So she didn't really live with her. So I guess somebody else would have dropped her off. So you can see this is when they're leaving the party. Because people stand outside there and take pictures when they're people coming to the party, leaving the party. After this, I'll show you another important person, Baba Siddiqui and his son Zishan Siddiqui. They also were in this closed party. So you see they actually had the car outside, and then they're entering the party. So once you're inside and you're all close circle, just friends and family, and that's Sonakshi Sinha. This is if she's leaving, and Sonakshi Sinha, right? And then there's Jacqueline Fernandez, who is also leaving right now. So as you can see, guys, what I mean is, like, this is like a very closed circle, right? But there you can see in that how close they are with Baba Siddiqui, Zishan Siddiqui, and once they are in the party, these are the same people sitting around in the party, right? There is Ria, and so she knows all these people. She knows Zishan Siddiqui. Of course, she knows Baby Penguin then, because Zishan Siddiqui and Baby Penguin are best buddies. And like, I think both of them are COVID positive right now, because I checked Zishan Siddiqui's Instagram too, and he's also turned COVID positive after Baby Penguin was COVID positive. At the same time, they were COVID positive, and I think the news is that now Manish Malhotra, I think, also is COVID positive. So somewhere these people are always meeting together somewhere, right? So if one is positive, I guess everybody's getting positive. How she's already like connected with this family. That's what I wanted to show you guys. So I don't know if she's Arpita's friend, like personal friend, or business wise she's getting connected, but she is in that circle. And don't forget, guys, this is December of 2018 jo party ka hai, right? And we have seen that she started dating SSR in the 2019 January. I mean, of course, she knew him. That is different. But she actually started dating him. And then she started living with him from April onwards. So she was in and out of his house. But then April onwards, she started living with him. April 2019. And this is December 2018 video of Sohail Ali Khan. Ali Khan, what am I saying? This is a video from 20 Cornerstone, everything right now, because she's in a party April of 2019, April of or time that she got hooked up with Sushant Singh, or yeah, she got hooked up after that, I think, because she knew Sushant, or they started dating in January, something like that, because she moved in with Sushant in April, I think, April of 2019, April of or June, I don't remember exactly. I think April. Yeah, April. She had started to come to their house and started living with him, and then she's, then all the staff was out. She started removing all the staff there, all this kind of stuff. So in June was when a lot of his staff that was working with him were gone. They were all gone, and then he was kind of just alone with her, right? And that the staff that she wanted only was there around him till November, like that. That is when he started deteriorating. And in September is when a lot of things came out, where he was wanting to be doing some project on Hollywood and all that thing, but he had already put everything in the back end, because probably they'd already started making him feel that he's sick, and he was hallucinating. He was all this depression.
blah 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 stuff that they claim that he was having. He probably was having all those things for a different reason, because they probably were drugging him for some time already. So I somehow feel that yes, she's come with a purpose in his life, and she did swindle him out of all the money. And maybe the plan was not to kill him in that way. Maybe the plan was just to kill him as an overdose of drug. But it so happened that probably even Disha came into picture, and he came in, and they knew something more probably. So something has happened there that, Disha had to go and he had to go. So there is much more to it. So basically, she probably was just a pawn, and that is why maybe some people who know that are trying to save her. But if we let the pawn go, we are never going to get to her boss, so we can't let her go right now. So that's the only thing. सी पार्टी में अब देखते रहिए एक Okay, अभी यहाँ पे focus who I'm trying to show here. This is what I was talking about. Hi Deepa, I saw your comment that you're not seen this because this is actually on my channel already. This is long back I had done this video to show Arpita and Ria's connection. So if you're not, go watch all my videos please, because yeah, बहुत सारा कुछ है last year से ये जो मैंने दिखाया है. This was this year I made though, but it is there from a long back. So look at this guy who comes there, okay? पूरा एक अंटरॉज जाता है यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी के साथ. मुझे पता नहीं कौन है वो आदमी जो व्हाइट शर्ट पहना था, बट उसके पीछे 2 या 3 कार आते हैं, पूरा सिक्योरिटी है. एक कार में पूरा बॉडीगार्ड्स है, 4, 5, 6 बॉडीगार्ड्स है. और वो आदमी कौन है पता नहीं, जो यहाँ पे निकल के अंदर जा रहा है. कोट, वो जो व्हाइट और शर्ट और कोट पहना था. It has been 2 months now, Dwanta fam, since I've been using Aerostore. You can see over this side. तो ये जो दिख रहे हैं, ये मैं जस्ट ऐसे गेस करके बोल रही हूँ. आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, क्योंकि ये थोड़ा किरण रिजिजू की तरह दिखते हैं, बट आई कांट बी कम्प्लीटली श्योर ऑफ दैट, क्योंकि ये यहाँ पे ग्लासेस नहीं पहने इसलिए थोड़ा दिख नहीं रहा है. पर जब आप अगर देखेंगे तो जब उतर के जा रहे हैं कार से, तब ग्लासेस पहन के अंदर जा रहे हैं. तो हो भी सकते हैं या नहीं, बट ये तब स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं थे. मैंने वेरीफाई किया कि 2018 दिसंबर में ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं थे. वो मई मंथ में, एक्चुअली मई 2019 में स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपॉइंट किए गए. बट हो सकता है कि ये पहले से ही कांस को जान. सो लाइक मैंने पूरा दूसरा वीडियो दिखाया, राइट, वेयर इज टॉकिंग, वो जो बाइसाइकिल वाला सलमान खान के साथ, जो अरुणाचल का. सो यू कैन सी दैट ही वाज एक्चुअली यूनियन मिनिस्टर एट दैट टाइम. एक्चुअली जब मैं ये वीडियो बनाई ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे किसी को भी आई डिडंट वांट टू काइंड ऑफ बी जस्ट लाइक alleging about him something just because he's in Salman's party, because that doesn't prove anything, correct? That's the reason I was trying to be careful with my words here, which I'll still be even today. But this was, like I said, he was union minister, because that was bicycle event you saw, that happened I think somewhere September, October, that time of 2018. तो ये पार्टी उसके बाद हुआ है. जानते हो, ये तो हो सकता है, राइट? तो उस ये से मैं जस्ट गेस कर रही हूँ, बट मैं भी श्योर नहीं हूँ. सो डोंट टेक मी फॉर माय वर्ड, आई एम जस्ट गेसिंग. इफ एनीबडी नोस फॉर श्योर, तो कमेंट बिलो एंड लेट मी नो, एंड आई कुड बी लाइक टोटली रॉन्ग हियर, बिकॉज बहुत सिमिलैरिटी तो है, बट आई कुड स्टिल बी रॉन्ग एज आई एम नॉट श्योर. एंड आई विल ऑल्सो शो यू गाइज वो एक क्लिपिंग जहाँ 2020 में उन्होंने एक IPL के ऊपर जो एक इंटरव्यू में कुछ बोला था, तो वो थोड़ा क्लिपिंग भी यहाँ पे डाल देती हूँ, आप कुछ कंपेयर कर सकते हैं. बट हाँ, यहाँ पे ग्लासेस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहे होंगे. तो सब लाइक डाउट में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी क्लियरली पता नहीं है. ये शायद कोई और हो सकता है, किसी को पता हो तो बता सकते हैं. और इनके जो बगल में बैठे हैं वहाँ, वो भी वो तो कोई चाइनीज की तरह दिख रहा है, कोई कोरियन चाइनीज की तरह, पता नहीं. The Minister for Youth Affairs and सॉरी, वो पता नहीं क्यों मैंने ऐसे बोला, बट आई थिंक वैसे भी अरुणाचल वाले एंड ऑल वैसे ही दिखते हैं, राइट, थोड़ा. सो दैट्स व्हाई मे बी
I saw him like that. Sports, Kiran Rijiju is joining us. Thank you very much, Mr. Rijiju, for speaking with us here on CNN News 18. So Lockdown 4.0 has this clause that stadiums can be opened for sport, but there will be no spectators allowed. Have any federations approached you? So this was the discussion that was happening during 2020. This is after SSR, okay? After SSR death. Remember कि IPL होगा कि नहीं, वो discussion चल रहा था, right? And हम लोग सब IPL के ऊपर bash कर रहे थे. IPL में जो betting होता है वो सब के चीजों के बारे में बात कर रहे थे. And this was a discussion at that time that was going on about IPL being there or not. And he was a sports minister then. Soon do you believe that sporting events, live sporting events can begin? Well, in fact, my ministry is constantly in touch with all the sports and the Indian Olympic Association people. Along with that, I am personally in touch with the sports persons as well as all the stakeholders. So we have taken a very holistic view. You know, everybody wishes that we must start the sporting activities as soon as possible. But the only issue is, our priority is the health and safety of the athletes and everyone, not only for the sports persons. So keeping the safety and health issue in mind, we have issued an instruction to open up all the sports complexes as well as the stadia. So you saw for yourself that, so when I see this connection, right, mera question ye hai, wouldn't I question? Like, why wouldn't I question that? Why he has a very close connection with the Khan family to be going to a personal party like that? One, and we have seen how much IPL is into the picture with the Khans. Two, and ये party December में था, right? So he has a very good close connection. उसके बाद May 2019 में ये sports minister बनते हैं. Okay, union minister थे पहले, उसके बाद sports minister 2019 में बनते. So that is the only reason, because of these things that I see. I'm hoping that he is sincere. Deepaji, exactly like you said, like that guy. No, everybody can decide. No claimant, exactly. And thank you so much, Deepaji. The whole session you have been giving me disclaimers. Thank you so much. So basically, I'm just saying that I am not saying that, you know, ये उस celebrity के साथ बहुत अच्छे दोस्त है या बड़ी है, so he's going to do this or do that, or alleging him with something. No, I'm not saying that. Like I said, I trust Modi ji. I trust why he has taken him for that law and justice. But now that he's there for law and justice, I hope that he's going to be, he's not going to be partial to anybody. He's going to be impartial, and he's not going to have these kind of connections come in between these kind of things, because we know how much the Bollywood needs this law and justice right now. We know that. That is the reason I brought these things up here today, just because people understand the connections, and people, if we see anything going wrong, we can question this person. Okay. Until then, yes, we are going to trust them and hope that they're going to be sincere. And, you know, if they are good people, they will be sincere. Okay. They are not going to be partial. And I hope that is how it's going to be. So we just need to show, I'm just kind of like showing, like, you know, just trying to make people aware of it. That's all, nothing else. Nobody is alleging anybody to be close to anyone or doing anything. Money is telling, yes, Chinese जैसे देख रहे हैं गुंडा, yes, जो मूवीज में दिखते हैं ना, जो साइड में जो रहते हैं, वो जब भी वो हांगकांग दिखाते हैं या कुछ भी दिखाते हैं मूवीज में, अगर हिंदी मूवी में भी देखो तो साइड में दिखते हैं वो गुंडे, जो कि चाइनीज, कोरियन, जो भी थाईलैंड वाले जो खड़े रहते हैं. That's how that guy looked who was next to him. That's why I said. But I think a lot of people also from you know, the eastern side and all look similar. They have the face cut, right? So yeah, I was mistaken there probably. I also probably kind of look a little bit like them.
Swapna ji is saying, okay, ji, yeah, see you in the next session. Yes, thank you. Join me for the next session. आज इतना ही था. आज इतना करने भी नहीं थी. मैं तो सिर्फ वो प्रोटेस्ट दिखाने आई क्योंकि मैं कुछ और भी करने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में. थोड़ा खाना वाना खा के then I'm going to do that, which you guys cannot probably join, but please watch it later. I'm doing some analysis. I'm not talking about the next session tomorrow. वो तो मैं करूँगी. That one you guys can come in because I will do it in the morning, which is like Sunday night for you guys. But right now for me it's evening, so I'm going to still try to do something because मुझे कभी time नहीं मिलेगा otherwise. That's why I'm going to work on some analysis and then you guys can watch that later. Cedar Springs, अच्छा hummingbird को hi बोल रहे हैं. हिमाद, अच्छा correct किया आपने. Okay, so thank you so much guys. मैंने किसी को मिस किया है? अच्छा मनी जी का मैंने डाला था. Parul, hi Parul from Canada. Thank you that you joined. And then किसी और का comment मैंने देखा था यहाँ पे. अच्छा ये from New Jersey. Good. Okay, you are also in the US. Hi Maki. Saying hi to all the cesareans and we'll keep fighting. Yes, we will. Maniji, criminal ready Riaya. Yes. Swapna ji is saying interesting. Paps know that the junk female by name looks like, yeah, exactly. We didn't know about her right before, but this is 2018 December, right? And they knew Ria. They knew her name by name. The paparazzi knew her. Very less about their connections. I wish there were SSR. So yeah, and that is also another reason that I don't think that 14 ko jo ek mystery girl thi, right? I don't think she was Ria. For one fact, I know some people are saying it could be Ria, which actually matches a lot, no doubt in that. Her body shape, everything matches a lot, the way she stands and everything. But she is not Ria for the simple reason that एक लड़की जिसको पता है क्या होने वाला है and she's blocked that person. She's not going to come there on the 14th and put herself in that spot. One. Second, the paparazzi would have actually recognized her in that way. I think so. She would have put herself in more problem, I think, if she came there. But actually, she wouldn't have. But I think she would have thought that because she's guilty. If she was not guilty, she would have been there, right? If she was not feeling guilty, then she would have come there to see her boyfriend. Even if she broke up, it doesn't matter. She would have come there to see. But she did not because uske andar hi wo guilt hai na. That's why she did not, because she didn't want to get involved in it. Okay, so thank you so much for watching, guys. ये conversation कहीं से कहीं चला गया just because you guys got engaged with me. It went somewhere. So thank you, Rekha ji. And also I want to say something to Rekha ji. You know, I like Rekha ji very much. She's अंदर से बहुत ही honest person है वो. That is the reason वो सबके लिए खड़ा होने की कोशिश करती है. And उस वजह से बहुत लोग ट्रोल करते हैं. Only advice I have, Rekha ji, for you is please do not go to the level of the trollers. That's all I can tell you. That don't go to the level of the trollers, because by doing that, आप अपना ही dignity खोएंगे. Why do you want to do that, right? So I do see a lot of things happening on Twitter, and I would only tell you because, you know, I think you are a very honest person that, you know, आप वो जो छल खपट है ना वो देखते नहीं है आप, इसीलिए आप सबके लिए खड़ा होने की कोशिश करते हैं. अगर कोई किसी के बारे में बोल रहा है, you are like नहीं, and you try to stand for it. So I can see that sincerity in you, and my advice to you is do not care for the trollers and don't go to that level of the trollers. Just be yourself. Just keep fighting for SSR. That's all we are here for. So let's focus on that and don't get into the all this, you know, trolling. अगर कोई dog bark करता है, you don't bark at that dog, correct? So let's not do that and let's focus. And I'm only telling that to you, Rekha ji, because I like you. Mani ji is saying thank you so much. Hummingbird me also just taking messages, no issues. Yes, okay. Okay, thank you so much for watching, guys. I will end this right here. And again, last, I'm going to put a disclaimer that I'm only showing whatever I showed about the minister to create awareness that ये लोग भी बहुत close
रहते हैं सेलिब्रिटीज के साथ, इसलिए हम लोगों को वी हैव टू कीप एन आई ऑन देम, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, because now if they are having such big responsibilities, let's keep an eye on them. I'm very glad that whatever the post that Narayan Rane ji got, I am glad. So those things are giving me little hope that somewhere kahin se shayad ye Rane family kuch na kuch help kare. Let's see, let's hope for the best, and I'll just leave this on that positive note, and I will see you guys later. I will come back in another hour to do my stuff. If you guys are there, join me. If not, watch me later. And tomorrow, please join me. Tomorrow in the sense, Sunday night for you guys. Join me again. I will be back. And I might do a StreamYard for that because people can join. And I don't know the topic yet. Like I'm always suddenly coming, doing it. I never even put on Twitter. Last minute में डालती हूँ, अगर कभी डालती हूँ तो. That is how my style is. So just bear with it, because my thing is to spread everything. It's not really about कि मैं कितने viewers को at that time grab कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ. It doesn't matter to me. If people want to watch me, they will still come and watch me even after my live session. So it doesn't matter, right? If I'm giving some good information, then you will still come and watch me, and I rely on that because I know you guys are smart. So thank you so much for watching, guys. कल देखती हूँ आप सबको, and 20 people that are still there now, and it's so late in India. मैं बहुत appreciate करती हूँ आप लोगों को जो मुझे अभी तक भी watch कर रहे हैं. Thank you so much. फिर मिलते हैं कल नहीं, या आपके लिए भी कल ही है, करेक्ट. कल मिलते हैं, कल आपके लिए जब रात होगा तब मिलते हैं. नमस्ते, जय हिंद, जय भारत.